Hello dear students, how are you? In last lecture, we have studied up to question number 8. These are the questions related to section formula for internal division and section formula for external division. Now read question number 9. D and E divides sides BC and CA of triangle ABC in the ratio 2:3 respectively. Find the position vector of the point of intersection of AD and BE and the ratio in which this point divides AD and BE. Means, suppose if you write the point of intersection of AD and BE, suppose this is point, you say it as P, then we are going to find P vector. P vector आपको find करना है, ठीक है। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या सॉल्यूशन किस डायरेक्शन से लेके जाना ये इंपॉर्टेंट है आपके समझ में आना। तो देखिए, जब भी पॉइंट डी एंड ई डिवाइड्स बीसी एंड सीए रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो, अब ये रेशियो एक ही दिया होगा ऐसा नहीं है, कभी ऐसा भी दिया होगा डी डिवाइड्स बीसी इन द रेशियो 2:3 एंड ई डिवाइड्स सीए इन द रेशियो 2:5 और 1:2, whatever may be the ratio. But when one point lie on this side BC and another point lie on side AC, and if you try to join these A to D and B to E, they must intersect each other. Means that point of intersection must be divides AD and BE internally. तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रेशियो आपको फाइंड करने के लिए आपको ए वेक्टर, डी वेक्टर, बी वेक्टर और ई वेक्टर का एक कॉमन रिलेशन फाइंड करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें। तो ये रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको दिया है डी का रिलेशन बीसी से और ई का रिलेशन सीए से, तो हम पहले यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन we will represent d vector in the form of b vector and c vector and e vector in the form of c vector and a vector. Now for that, let a vector, b vector, c vector, d vector, e vector be the position vectors of points A, B, C, D, and E respectively. Now as we know that D divides BC internally in ratio 2:3. Therefore we have D vector is equal to 2 into B vector, 2 into C vector, 2 into C vector plus 3 into B vector divided by 2 plus 3. Means we can say that 5D vector is nothing but equal to 2C vector plus 3B vector. Got it? We'll call it as first. सेम रिलेशन दिया है E का CA के साथ. Also E divides CA internally in the ratio 2:3. Therefore we can say that E vector is equal to, use the section formula for internal division, 2 into A vector plus 3 into C vector divided by 2 plus 3, means we have 5E vector is equal to 2A vector plus 3C vector. Look at this. As the ratio of division is given, we have found the position vector of point D in the form of position vector of point B and position vector of point C. Similarly, E divides CA in the ratio 2:3. CA in the ratio 2:3 means we have found this relation of E vector in the form of C vector and A vector. Now after finding this relation,
The question is for the point of intersection of AD and BE. AD and BE के point of intersection का जो रेशो है वो फाइंड करना है हमें, इसलिए हमें ए वेक्टर, डी वेक्टर, बी वेक्टर और ई वेक्टर का रिलेशन फाइंड करना है, ये पहले समझना है। अब जो दो रिलेशन आपको मिले हैं 5d वेक्टर इज इक्वल टू 2c वेक्टर प्लस 3b वेक्टर एंड 5e वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको? c को अगर एलिमिनेट किया तो डायरेक्टली आपको a, e, b और d का रिलेशन मिलेगा। तो आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करो, इसमें 3c वेक्टर है, इसमें 2c वेक्टर है, तो इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों की सब्ट्रैक्शन करो तो c वेक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 15d वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 6c वेक्टर प्लस 9b वेक्टर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10e वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 4a वेक्टर प्लस 6c वेक्टर, इनकी सब्ट्रैक्शन करो तो ये 6c वेक्टर में से 6c वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 15d वेक्टर माइनस 10e वेक्टर इज इक्वल टू 9b वेक्टर माइनस 4a वेक्टर। अब जैसे इसको बोला है सेगमेंट AD एंड BE, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि A और D को साथ में ले लो और B और E को अलग से रखो। तो ये 4a को इधर शिफ्ट करो तो हो जाएगा 4a वेक्टर प्लस 15d वेक्टर इज इक्वल टू 9b वेक्टर प्लस 10e वेक्टर। समझ में आ रहा है आपको? देखिए 4 प्लस 15 ये 19 है, 9 प्लस 10 ये भी 19 है, तो दोनों साइड को 19 से डिवाइड करो। Therefore, dividing by 19 we have 4a vector plus 15d vector divided by 19 is equal to 9b vector plus 10e vector divided by 19। तो इसका मतलब क्या हो गया? These are nothing but the position vector of point P which divides AD and B. Therefore, we can say that P vector is equal to 4a vector plus 15d vector divided by 4 plus 15, that is nothing but 9b vector plus 10e vector divided by 9 plus 10. It means we can say that it is nothing but the position vector of point P. Therefore, we can say that point P divides AD internally in ratio 15:4 and segment BE internally in ratio 10:9। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि आपने सेगमेंट अगर ऐसी पढ़ी है तो रेशियो उल्टा पढ़ना है, यानी सेगमेंट को AD पढ़ा है तो रेशियो उल्टा पढ़ो, ये सेगमेंट को BE पढ़ा है तो रेशियो 10:9 ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेशियो इन विच दैट पॉइंट P डिवाइड्स AD एंड BE एंड दीज आर नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, समझ में आया आपको? तो चलो इसको नोट कर लो। Now see for next question, question number 10. Find the ratio in which point P divides AB and CD where AB and CD where A has coordinates 2, -3, 4, B has coordinates 0, 5, 2, C has coordinates -1, 5, 3 and D has coordinates 2, -1, 3. Now when the question is find the ratio where point P divides AB and CD, means AB and CD must intersect each other at point P.
Means here also we are going to find the relation between a vector, b vector, c vector and d vector. For that, from these 4 points a, b, c, d, we'll find 3 vectors, ab vector, ac vector and ad vector, and we have to replace any one of that vector as a linear combination of another 2 vectors. Means these 4 points must be coplanar, और 4 पॉइंट कोप्लेनर होने के लिए हमें इन 4 पॉइंट से जो 3 वेक्टर्स बनते हैं वो 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर दिखाना जरूरी होता है. तो पहले हम इनके पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं. विल कंसीडर लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स A, B, C, D respectively. Therefore, we have position vector of A is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. B vector has its position vector that 5j cap plus 2k cap. C vector is equal to minus I cap plus 5j cap plus 3k cap, and D vector is equal to 2i cap minus j cap plus 3k cap. क्वेश्चन रीड करने के बाद इस क्वेश्चन में क्या करना है ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि हमें पहले एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहां पे क्वेश्चन था शो दैट दीज 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, लेकिन यहां पे पूछा है कि फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P डिवाइड्स AB एंड CD, यानी पहले ABCD ये 4 पॉइंट को कोप्लेनर दिखाना जरूरी है, ये आपको समझना जरूरी है. तो हम पहले AB वेक्टर फाइंड करते हैं. देयरफॉर AB वेक्टर इज नथिंग बट B वेक्टर माइनस A वेक्टर. तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर करो तो ये आएगा माइनस 2i कैप, 5j प्लस 3j इज प्लस 8j कैप and 2k minus 4k is minus 2k cap. फिर AC वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. AC वेक्टर इज नथिंग बट C वेक्टर माइनस A वेक्टर. C वेक्टर माइनस I minus 2i is minus 3i cap. Then 5j plus 8j cap and 3k minus 4k is minus k cap. And AD vector is equal to D vector minus A vector. That is 2i cap minus 2i cap is 0, minus j plus 2j is plus 2j cap, and plus 3k cap minus 4k cap is minus k cap. These are nothing but 3 vectors, AB vector, AC vector and AD vector. Now let's consider, let AB vector is equal to some lambda into AC vector plus mu into AD vector. So therefore AB vector is minus 2i cap plus 8j cap minus 2k cap is equal to lambda into AC vector is minus 3i cap plus 8j cap minus k cap, and plus mu into 2j cap minus k cap. ठीक है. अब इस ब्रैकेट को लैम्बडा से और इस ब्रैकेट को म्यू से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा माइनस 2i कैप प्लस 8j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू, देखो माइनस 3 लैम्बडा इंटू आई कैप प्लस 8 लैम्बडा प्लस 2 म्यू, 8 लैम्बडा प्लस 2 म्यू इंटू j कैप and minus lambda minus mu into k cap plus minus lambda minus mu into k cap. अब LHS और RHS कंपेयर कीजिए तो आपको मिलेगा therefore minus 3 lambda is equal to minus 2, तो lambda is equal to आएगा 2/3. दूसरा रिलेशन है 8 lambda plus 2 mu is equal to 8. लैम्बडा की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो ये आएगा 16/3 प्लस 2 म्यू
is equal to 8, 2 mu is equal to 8 minus 16 by 3, 2 mu is equal to 24 minus 16 is 8 by 3, therefore mu is equal to 4 by 3. अब देखते हैं इस लैम्बडा और म्यू के लिए थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई होता है क्या. नाउ थर्ड इक्वेशन इज एंड माइनस लैम्बडा माइनस म्यू इज इक्वल टू -2. टेक LHS is equal to minus lambda minus mu, that is minus lambda is -2 by 3 minus 4 by 3, that is equal to -6 by 3, means equal to -2 is equal to RHS. Means LHS is equal to RHS. It means we have the values of lambda and mu are correct. यानी जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मिले हुए लैम्बडा और म्यू के वैल्यूज है वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. Therefore we can say that this AB vector is equal to lambda की वैल्यू 2 by 3 into AC vector and plus 4 by 3 into AD वेक्टर. तो अब इनको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. इसे लिखेंगे B वेक्टर माइनस A वेक्टर. 3 से मल्टीप्लाई कर लो साथ में. 3 इंटू B वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू C वेक्टर माइनस A वेक्टर प्लस 4 इंटू D वेक्टर माइनस A वेक्टर. मल्टीप्लाई करो तो आएगा 3B वेक्टर माइनस 3A वेक्टर is equal to 2C vector minus 2A vector plus 4D vector minus 4A vector. अब देखिए जैसे कि हमें AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर, तो AB को एक साइड में ले लो और C एंड D को एक साइड में ले लो. A एंड B यहां से जो A के वेक्टर्स है इनको इधर शिफ्ट कीजिए तो ये आएगा -2a minus 4a मीन्स -6a, इधर आने के बाद +6a होगा. ये 3b वेक्टर प्लस 3a वेक्टर इज इक्वल टू 2c वेक्टर प्लस 4d वेक्टर, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 6 से डिवाइड करो इसे तो इसे कहेंगे हम 3a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डिवाइडेड बाय 6 is equal to 2c vector plus 4d vector divided by 6 is equal to p vector, that is the position vector of the point. And now we can say that therefore point P divides AB internally in ratio 1:1 and BC in ratio CD in the ratio CD in 2:1. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं therefore P वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए ये 3a प्लस 3b अपॉन 6 है तो इसे लिखेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2. इट इज नथिंग बट c वेक्टर प्लस 2d वेक्टर अपॉन 3. These are the position vectors and from that we can find this ratio. And P is the midpoint of AB and P divides CD in the ratio 2:1. तो इसे नोट कर लीजिए, इसे समझ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. Now look at for question number 11. Prove that the line segment joining the points of adjacent sides of a quadrilateral forms a parallelogram. ये प्रॉपर्टी हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखी थी. 9th स्टैंडर्ड में हमने कहा है कि consider any quadrilateral and join all the midpoints of a quadrilateral, then the required quadrilateral formed is always a parallelogram. Now suppose this ABCD is a quadrilateral and P is a midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD and S is the midpoint of AD. If you join these coordinates, if you join these midpoints P, Q, R, S respectively, then formed triangle, formed quadrilateral is a parallelogram. तो इसके लिए हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है. मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे. लेट
ABCD be a quadrilateral? Points PQRS are midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. Now we'll consider the position vectors. Let A vector, B vector, C vector, D vector, P vector, Q vector, R vector and S vector be position vectors of points A, B, C, D, P, Q, R and S respectively. Now this is about the basic things which we have represented in the figure. Now to show that quadrilateral PQRS is parallelogram, we must know the definition of parallelogram. One quadrilateral is said to be parallelogram if its opposite sides are parallel. Means we have to find the vectors for opposite side, means PQ vector and SR vector. If you show PQ vector and SR vector are equal, then we can say that PQ is parallel to SR. As well as if you show this QR vector and PS vector are equal, then we can say that they are also parallel to each other. And if both pairs of opposite sides are parallel, then that quadrilateral is always a parallelogram. Now first of all, we'll find the position vectors of points PQRS using midpoint formula. Using midpoint formula we have, we have P vector is equal to, as P is a midpoint of AB, we can say that P vector is equal to A vector plus B vector upon 2. Q vector is, Q is a midpoint of BC, therefore it is B vector plus C vector upon 2. R is a midpoint of CD, therefore R vector is equal to C vector plus D vector upon 2. And S is a midpoint of DA, therefore S is A vector plus D vector upon 2. After finding the position vectors of all midpoints, we will find first PQ vector. Now PQ vector is equal to Q vector minus P vector. What is Q vector? Q vector is B vector plus C vector upon 2 minus P vector is A vector plus B vector upon 2. That is nothing but equal to 1 by 2 into bracket B vector plus C vector minus A vector minus B vector. Now this B vector get cancelled, means PQ vector is half into C vector minus A vector. Call it as first. Similarly, we can find SR vector. Also, SR vector is equal to R vector minus S vector. What is R vector? R vector is C vector plus D vector upon 2 minus S vector is A vector plus D vector upon 2. That is nothing but 1 by 2 into bracket C vector plus D vector minus A vector minus D vector. Now D vector get cancelled. We have it is half into C vector minus A vector. We'll call it as second. Observe the both statements first and second. We can say that from first and second, PQ vector is equal to SR vector. And when two vectors are equal, means they are in same direction and same magnitude. Therefore, we can say that PQ is parallel, segment PQ is parallel to segment SR. Call it as third. Similarly, we can prove
this QR vector is equal to PS vector. QR vector is equal to PS vector. Therefore, we can say that segment QR is parallel to segment PS. And then from third and fourth, what can you observe? If both sides of both pairs of opposite sides are parallel, then that quadrilateral is a parallelogram. Therefore, we can say that from third and fourth, we can say that quadrilateral PQRS is a parallelogram. समझ में आया? चलो नोट करो इसे, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. Now look at for question number 12. Prove that a quadrilateral is a parallelogram if and only if its diagonals bisect each other. Now this is the statement having if and only if. Means here we have to prove theorem as well as its converse. Means here we are to go through two concepts. If a quadrilateral is a parallelogram, then its diagonals bisect each other. And conversely, we have to prove if diagonals of a quadrilateral bisect each other, then that quadrilateral is a parallelogram. यानी जब भी आपको स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ आएगा तो आपको ये स्टेटमेंट दो तरीके से प्रूव करनी पड़ती है, इफ देन का पार्ट और उसका कन्वर्स दोनों में जाना है. तो हमने क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी कंसीडर किया. कंसीडर क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, कंसीडर quadrilateral ABCD. Let we can say that let diagonals AC and BD intersect each other at point M. इसके पोजीशन वेक्टर कंसीडर करेंगे. लेट A vector, B vector, C vector, D vector and M vector be position vectors of points A, B, C, D and M respectively. ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमने फिगर के बारे में लिखी है. अब पहले क्या प्रूव करना है हमें? If a quadrilateral is parallelogram, then its diagonals bisect each other. यानी अब हम थ्योरम प्रूव करेंगे. तो यहां पे given that quadrilateral ABCD is a parallelogram. अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमें पता है पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं they are parallel to each other and they are having same length. Means vector AB and vector DC are equal to each other. Therefore, we can say that AB vector is nothing but equal to DC vector. Convert them in the form of position vectors. Therefore, we have B vector minus A vector is equal to C vector minus D vector. Now transfer this A vector on that side and D vector on this side. Means B vector plus D vector is nothing but equal to A vector plus C vector divided by 2. Therefore, we can say that B vector plus D vector upon 2 is nothing but equal to A vector plus C vector upon 2. Let it be M vector, which is a position vector of point M. Therefore, we can say that M is midpoint of both AC and PD. It means we can say that therefore diagonals AC and PD bisect each other. यानी हमारा थियरम का जो पार्ट है वो यहां पर प्रूव होता है. दे बाइसेक्ट ईच अदर. अब इसके कन्वर्सली जाना है. यानी
अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है हमें। तो कन्वर्सली वी कैन से दैट, कन्वर्सली if diagonals of quadrilateral, diagonals AC and BD of quadrilateral ABCD bisect each other, तो क्या होगा? Therefore we can say that bisect होते हैं यानी M is midpoint of AC and BD। कंप्लीटली उसके रिवर्स जाना है, उल्टा जाना है, ठीक है। अगर AC एंड BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी दोनों का मिड पॉइंट एक ही है, इट मींस वी हैव M वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन 2 एंड M वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस D वेक्टर अपॉन 2। Therefore you can say that A vector plus C vector upon 2 is equal to B vector plus D vector upon 2. Multiplying both sides by 2, we have A vector plus C vector is equal to B vector plus D vector. Therefore, you can say that C vector minus D vector is equal to B vector minus A vector. Therefore, we can say that DC vector is equal to AB vector. और DC vector is equal to AB vector का मतलब क्या होता है? Therefore, AB is parallel to CD and length of AB is nothing but equal to length of CD। और आप ये ध्यान में रखिए कि कोई भी क्वाड्रिलैटरल हो उसके अपोजिट साइड की एक पेयर अगर पैरेलल एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट है तो वो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम होता है। Therefore we can say that quadrilateral ABCD is a parallelogram। यानी यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि AB is parallel to CD दिखाने के बाद सिमिलरली वी कैन प्रूव, जैसे हमने अभी AB और CD पैरेलल दिखा है वैसे BC एंड AD ये भी पैरेलल दिखा सकते हैं, यानी वैसा भी लिख सकते हो, या एक ही पैर से भी हम ये जज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे भी शिफ्टिंग अगर थोड़ी सी चेंज की, अगर C को इधर B को इधर शिफ्ट किया और D को इधर शिफ्ट किया तो हम प्रूव कर सकते हैं कि BC इज पैरेलल टू AD। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, प्रूफ अच्छे से समझिए, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये जो थ्योरम्स है इसके प्रूफ्स आपको आने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। Now look at for question number 13. Prove that the median of trapezium is parallel to the parallel sides of a trapezium and its length is half of the sum of the lengths of the parallel sides. It means if you consider a quadrilateral ABCD with AB is parallel to CD, M and N are the median of trapezium, means the segment joining the midpoints of non-parallel sides of a quadrilateral. Here, consider trapezium ABCD, consider trapezium ABCD with side AB is parallel to side CD. Means AD and BC are the non-parallel side. Therefore, let M and N be the midpoints of sides AD and BC respectively. Therefore, we can say that MN is median of trapezium. और अब आपको प्रूव करना है कि MN ये AB और CD को पैरेलल है और MN की जो लेंथ है वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स AB एंड DC। तो इसके लिए
हम पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले पोजीशन वेक्टर क्या क्या होंगे, लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, एम वेक्टर एंड एन वेक्टर बी m vector and n vector be the position vectors of points A, B, C, D, M and N respectively of, therefore we can say that using midpoint formula क्या होगा, अगर m इज मिड पॉइंट ऑफ AD है तो m वेक्टर इज इक्वल टू आएगा a वेक्टर प्लस d वेक्टर अपॉन 2 एंड n इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC यानी n वेक्टर इज इक्वल टू आएगा b वेक्टर प्लस c वेक्टर अपॉन 2। समझ में आ रहा है? तो mn वेक्टर फाइंड करेंगे, देयरफॉर mn वेक्टर इज इक्वल टू n वेक्टर माइनस m वेक्टर। n वेक्टर क्या है, n वेक्टर इज b वेक्टर प्लस c वेक्टर अपॉन 2 minus m vector is a vector plus d vector upon 2, that is equal to 1 by 2 into bracket b vector plus c vector minus a vector minus d vector, that is equal to 1 by 2 into bracket b और a को साथ में लेंगे b vector minus a vector plus c vector minus d vector, that is equal to 1 by 2 into ab vector plus DC vector. This is nothing but mn vector. तो देखिए mn is, therefore we can say that mn vector is scalar multiple of AB vector plus DC vector, and therefore mn vector is parallel to AB vector plus DC vector, and when mn vector is parallel to AB plus DC, therefore mn vector is parallel to AB vector and mn vector is parallel to DC vector. Now when mn is parallel to AB plus DC, then why can we say that mn is parallel to AB as well as DC? Because we know that AB and DC are parallel to each other. Since we can write AB vector is parallel to DC vector, it is known to us. Okay, similarly we can say that also magnitude of mn vector is equal to half into magnitude of AB vector plus DC vector. Now here AB vector and DC vector are non-intersecting vectors. They are parallel to each other. Therefore we can separate it. Therefore we can say that mn is equal to half into AB plus DC. It denotes the magnitude, DC vector name AB plus DC. Hence we can say that length of mn is half the sum of the lengths of parallel side. इसको भी सेपरेट करते समय यही रीजन है कि AB वेक्टर एंड DC वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ प्रूव हो गई, जिसमें एक में दिखाया है हमने कि mn वेक्टर इज पैरेलल टू AB वेक्टर एज वेल एज DC वेक्टर, और यहाँ पे दिखाया है mn इज लेंथ ऑफ mn इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ AB प्लस DC। ठीक है, यहाँ पे अपना ये 13th क्वेश्चन खत्म होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। Now read question number 14. If two of the vertices of triangle are given A and B, A के कोऑर्डिनेट दिए हैं, B के कोऑर्डिनेट दिए हैं, and centroid of triangle G is given -1, 2, 1, and the question is to find the coordinates of the third vertex C of the triangle. ट्रायंगल हमने लिया है एक, और इस ट्रायंगल में A B के कोऑर्डिनेट दिए हैं, G के कोऑर्डिनेट दिए हैं, हमको C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। आप सेंट्रॉइड फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और वो यूज किया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें वो थ्योरी पार्ट में दिया हुआ है। तो हम जैसे कि कंसिडर करेंगे, लेट
C has coordinates x, y, z। ठीक है, G के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको, G इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। Therefore, using centroid formula, we can write this x coordinate of G, that is -1, is nothing but equal to x coordinate of A is 3, x coordinate of B is -4, x coordinate of C is x, n plus x divided by 3. This 2 is equal to x coordinate of y coordinate of A is 1, y coordinate of B is 5, and y coordinate of C is plus y divided by 3, and 1 is equal to again x coordinate of A is 4 plus z coordinate of B is 3, and z coordinate of C is z divided by 3. Therefore, -3 is equal to -1 plus x, and hence x is equal to -2. Also, 6 is equal to 6 plus y, therefore y is equal to 0, and 3 is equal to 7 plus z, therefore we can say that z is equal to -4. Hence we can say that C has coordinates -2, 0, -4. These are the coordinates of point C. Okay, in this way we can use centroid formula to find coordinates of C. आप यहाँ पे वेक्टर भी यूज किया तो भी चलेगा, लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। आप ए वेक्टर फाइंड आउट करो, बी वेक्टर फाइंड आउट करो, सी वेक्टर फाइंड आउट करो, और जी वेक्टर फाइंड आउट करो, और फिर यूज करो ए जी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3, मीन्स 3g वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और फिर इसमें ये वैल्यूज पूरे रखने के, यहाँ पे एक्स वाई जेड के आई जे के को कॉमन निकाल के इक्वेशंस फॉर्म करो और उनको सॉल्व करो, एक्स वाई जेड के वैल्यूज मिलेंगे। यानी 2 मेथड्स है, और में ये मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 15 है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 फॉर होमवर्क, ये आप घर पे सॉल्व कीजिए। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लेक्चर में इतना काफी है। थैंक यू।